कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। Uh, Good afternoon, Surya. Tell me something about your film Women's Diaries. Thank you so much, sir. This Women Diaries is my debut film. So this story came from my heart. So that's why I want to deliver it myself only. The story represents all victims. How to get their strength and abilities, capabilities after any issue. So after completed my script, I decided to do all over India. So पूरा देश देखना है ये मूवी. So after that I came to Bombay and approached Mugdha Godse ma'am. After she listening the story, she's immediately said, I'm into this project. I'm very thankful to you, ma'am, for accepting a debut director like me. Thank you so much. After that, we approached Pan India actress Sudha Chandran ji, and she also appreciated me. Definitely, I'll do. I'm so thankful to you, ma'am, accepting to come out in our project. Thank you so much. So, two more actors, known actors, will enter in this project. I will announce their names after confirmation. So, this film shoot starts from 10th of March and finished in April first week. 20 days you will take. Almost 25 days. It's a feature film or a web series? It's a complete feature film. I wanted to release in theaters. How much I can. Not a web series. It's not a web series. It's a complete feature film. So you are confident of getting theatrical buyers for this? I don't know it, but this concept, this subject should be released in theaters. What do you think about the new format of OTT? Because many small good films don't get released in theater. I hope your film gets a theatrical release. But what do you think about OTT platform? Yeah, OTT platform is very good to all beginners and debut directors also. So, but my if I choose another subject, maybe I also think like that. But these Women Diaries concept is different. So it should be released in theaters only. So that's why that too all over India. So as of now I am planning for Hindi, Telugu and Tamil only. So if I get chances, I get distributors, then definitely it will be releasing in all over India. You mean it will be dubbed in Tamil and Hindi, Telugu? Yes, not dub. It's a completely
3 languages I am doing directly. With different actors. Telugu, Tamil I am planning for that, but not yet. I can't say no. But you have talked to some actors, Yes, I am going. Talks are going. Definitely, it will be happen. newcomers or known actors. No, I definitely need a known actors because that's why I came to Bombay. Because this subject, if I do with new actors, it can't be go out. That much of viral नहीं हो जाएगा शायद. That's why I wanted to do with known actors. लेकिन सुधा चंद्रन खुद एक साउथ इंडियन है, तो उसको लेके Yes, तमिल she's- और तेलुगु में आप कास्ट कर सकते हैं. No, she is in all over Oh. all languages. She's one in all languages. अच्छा, Because- डायरीज का मतलब इट्स अबाउट द रेप विक्टिम्स और सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स और इमोशनल प्रॉब्लम विक्टिम्स, डोमेस्टिक अब्यूज. Definitely. These diary means women diaries. Diary means it's a personal page of everyone, not women. Not, diary means हम किसी को हमारा नहीं बोल सकते हैं वो डायरी में लिख देते हैं. That's why I took that word diaries. Each diary, each woman life. It's not a diary. It's a life of a woman. That's why I choose women diaries. It is one woman's diaries. No, not one woman. All women's. Oh. All women's. You can identify in anybody can identify in this because जो रेप का जो सारा मीडिया, सारा न्यूज़, सारा जो एक्टिव थिंग्स presenting only rapes and murders only. But how about domestic violence? So these all anybody, any woman can find themselves in this women They diaries. can easily identify with it. Exactly. But do you think the time is ripe to make a film which is showing the problems of women? Women problems means it's not started now. From years they are facing everything. They bear it. They simply bear it. So it's not like a period of time. I want to give strength to this kind of victims, all victims. It's not like you watch this, you can get strength. No, but movies देख के ऐसा बदल नहीं हो सकता है मूवी से. लेकिन एक आइडिया तो है मन पे, एक आइडिया तो दिया है मैं मन पे. जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस you are facing, तो डेफिनेटली यू कैन. सो उस दिन मैं पढ़ा था, उस दिन मैं देखा था, कहीं पे मैं पढ़ा था, कोई मेरे को बोला था, यही मन में चलते रहता. सो उस समय में ये आइडिया आए तो कुछ ऐसा वाला कुछ कर सकता है, हो सकता है. अच्छा, how did you stumble upon your subject? Newspaper cuttings or personal ladies' experiences? No. I don't want to ask questions to go to a rape victims and all. It's very panic. There will be panic because we remember those things again. So I don't want to do that. So what I felt, so वो जगह पे मैं हूँ, वो विक्टिम मैं हूँ. एक मैं कैसे फील होता था, मेरे को हुआ रे, मैं कैसे फील हो जाता, वही मन से मैं सोचा था. 2-3 फ्रेंड्स का रेफरेंसेस है, माय वेल विशर्स है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है. सो यही खुद हम बनाया था, लेकिन नॉट लाइक रियल इंसिडेंट एज रियल इंसिडेंट्स आई कांट से, बट इज प्रेजेंट लाइक दैट. And what are the difficulties you had to face when you decided to make a film like this? Definitely I don't know now, but anyway I strictly binded over to first finish this concept, finish this shoot, and after that मैं कितना सोचा था मैं बम्बई तक आता है, मैं तो अभी तो आ गया. किसी से कन्विंस करता नहीं कर सकता. 2 आदमी को, 2 नॉन एक्टर्स को कन्विंस किया था. दे एक्सेप्टेड माय कॉन्सेप्ट
सो थिंग्स हो सकता है. And what do you think that fitted the part with Mugdha? What you found in Mugdha as an actor that you said, this actress I want? Yeah, she did number of films actually, but her face is like presents like a normal common woman. So there is a she has a simple face, so she can present all emotions. So that's why I choose Mugdha ji. And Sudha Chandran? Sudha Chandran is a very सुधा जी का हम क्या बात कर सकते हैं, सबको वो जानता है. शी नोन एक्ट्रेस ऑल ओवर इंडिया, नॉट लाइक शी फेस्ड अ नंबर ऑफ ट्रबल्स, शी फाइट विथ एवरी डे शी फाइट्स. सो सुधा जी के लिए हम बात नहीं कर सकते. थैंक यू सुधा मैम, थैंक यू मुग्धा गॉडसे जी फॉर एक्सेप्टिंग दिस प्रोजेक्ट. उनका क्या कैसा रोल है सुधा जी का? सुधा जी का रोल है, शी इज़ ए लॉयर, शारदा है उनका नाम. शी फाइट्स एवरी टाइम, फॉर एवरी साइड ऑफ विक्टिम्स. सो शी फेस लॉट ऑफ इश्यूज, warnings from their side. So she faces number of, she's a very known lawyer. So some issue, she starts their her file. How should women as a victim women, she presents her through her. Mugdha ji will come and other actors will come. But Their as- stories will come. As a director, your vision, does it include a backstory of Sudha Chandran also? No. Why she got into this profession as a lawyer? No. Actually, टीचर का बात ही रहता है. सो कोई बोलते सुनना है, वो बिलीव करना है. सुधा जी का दैट काइंड ऑफ ये है. सो शी टेल, एवरीबडी बिलीव्स. दैट्स व्हाई वी चूज सुधा चंद्रन. But generally, not that I am attracting people in different language zone, but being a Telugu by birth, you never thought of making a Telugu film first and then coming to Hindi and Tamil? Exactly. I have very much interested to do a film in Telugu. I check all number of subjects and all. But once I finalized, I wrote this script, I completed this script, when I thought it should be national language. So that's why my plans were changed. So I wanted to do a Hindi film. It's written Vaishnavi and Jahnavi presents. Who are Vaishnavi and Those Jahnavi? are my daughters. Oh. As a two daughters of a father of two daughters, and two siblings, two sisters of a brother of two sisters. So I normally ये सीन्स आता था ना मीडिया में, जो आता था वो बहुत डर लगता. So that's why I wanted to do this kind of film, my own. You empathize a lot with women because you have been brought around women, siblings also women, Exactly. daughters also. Exactly. Hmm. बट बहुत जो फैमिली होता था, वो फैमिली सोचता था. Hmm. जो नई फैमिली, बिना फैमिली, शायद वो भी अच्छा रहता, लेकिन सो जो इमोशंस से नहीं होता था शायद. And who are your favorite directors, both Telugu as well as Hindi? How can I say, sir? Lot of directors are there. Everybody they are doing. एक डायरेक्टर होने के लिए कितना मुश्किल है. वो एक एज ए डेब्यू डायरेक्टर आई कैन से. सो ये इतना बड़ा डायरेक्शंस से इतना किया है, वो बहुत बड़ा फिल्म्स किया है. नॉट ए सिंगल नाम मैं बोल सकता हूँ. नहीं, somebody who inspired you as a, अरे इनको देख के मैं भी सीख लिया. या वो तो नहीं कह सकता हूँ.
lot of directors are all directors. I love films basically. I love films. There is no favorite actor. There is no favorite actress. There is no like favorite director. Which movie you like? So no, number of films. I like. I love to watch movie. That's But you it. are not assisted Not- anybody in direction. Huh? You are assisted anybody No. to learn No. direction. No, actually, my 2-3 people produced some films in Telugu. So I am very much interested in films. बचपन से बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं जॉइन रिक्वेस्ट एंड जॉइन लाइक एज ए मैं भी देखता हूँ, तेरा प्रोडक्शन का साइड में रहता हूँ, पूरा वॉच करता हूँ. मैं खुद जाके रिक्वेस्ट करके ज्वाइन हुआ था, सब बैक एंड से फॉलो अप किया था. So then I came to know what is production, what is making. After know I learned like some kind of crafts like editing and post-production part. So it's I can't say like totally, but I can know about that editing. I can know about that camera. I know about what is all. So the basic idea I learned how to make a film technically. And final two questions. Who are your favorite actors? Those questions also I can't say. So please. You want to be very diplomatic. Not a diplomatic. So everybody ये मूवी देखे तो उन्हों ट्रेमेंडस, ये फिल्म के लिए उन्हों ट्रेमेंडस, ये इमोशन के लिए उन्हों ट्रेमेंडस, और किसी का नाम ही नहीं आता. जो वो नाम बोले तो वो उनका फेवरेट है, वो है, ऐसा नहीं है, हम नहीं बोल सकते. आई लाइक एवरीवन, न्यू एक्ट्रेस से जो वेटरन एक्ट्रेस तक, वेटरन एक्ट्रेस से न्यू एक्ट्रेस तक, आई एम वेरी मच I love those characters. I am very much like to watch their feelings and all. Because I don't want to be a category person. That is also diplomatic bole to it's diplomatic. Thank you, Surya. It was a wonderful interview. And just with one question, when are you targeting a release for your film? Yeah. In 3 languages, it will be released same time or separate timings? Exactly. I want to release same date, same in all languages. So that is I am planning in August. Because April 10 तक शूट का पार्ट रहेगा, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन सब करके फिर तभी मार्केटिंग के बारे में सोचना है. वो कौन मेरा जो वो तभी मालूम होता मेरा कैसा है. तो तभी शुरू होता प्रॉब्लम्स. सो रिलीज़ कर सकता हूँ, बहुत विश्वास है. And what after Women's Diaries? What? Which next film after Women's Diaries? पहले ये शूट करने दीजिए. दिस इज़ द माई फर्स्ट टारगेट. पहले था मैं बॉम्बे जाना है, किसी को कन्विंस करना है. दैट इज़ माई फर्स्ट टारगेट रखा है. बिकॉज स्क्रिप्ट आई कैन राइट विथ माई सिंपल वन पेन एंड सम पेपर्स. बिकॉज थाट्स आर फ्री, पेन आर वेरी लेस cheaper, पेपर्स आर cheaper. I can write, I can think. But I have to convince someone. That is more difficult because I am a debut. पहले कुछ किया था और कुछ भी नहीं किया, तो मैं कैसे उनके पास लेके जा सकता हूँ. कोई किसी को रिक्वेस्ट किया, अरे उनको मेरे को लेके जाओ, अरे तो कुछ भी नहीं किया, कैसे ले सकता हूँ, क्या बोलूँ मैं. दिस क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई फेस. सो बट मैं तो आ गया बॉम्बे. मुग्धा मैम को कनेक्शन मिला है, उसको जाके स्टोरी भेजा है, उसको सुन के मेरे को वापस टाइम दिया है, एक्सेप्ट किया है. आई एम वेरी थैंकफुल टू मुग्धा मैम. एक्सेप्टेड मी, एक्सेप्टेड आवर प्रोजेक्ट, एक्सेप्टेड आवर कॉन्सेप्ट, एंड डेफिनेटली इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी. एंड सुधा जी जस्ट she heard this line, okay, I'll do it, that's it.
Thank you so much, Sudha ji. Definitely, I try to prove my level best. So that's it. तो बाकी अभी नेक्स्ट टारगेट है, अभी इसको इतना सीनियर एक्ट्रेस का और 2 मेल एक्ट्रेस आना था प्रोजेक्ट में, वो भी अभी कन्विंस कर रहा हूँ. कन्विंस मीन्स टाइम लेना हो, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस के लिए वेट कर रहा हूँ. वो भी ख़त्म हो जाता 2 दिन में. When you will go on the floor? On the floor, 10th March, my shoot starts in Hyderabad. Oh. First schedule in Hyderabad, second schedule in Mumbai. Each 10 days. हाँ एग्जैक्ट. फर्स्ट वीक में बीच में थोड़ा गैप्स है, वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक क्लोज हो जाए, फिनिश हो जाए. सो पहला टारगेट है, पहले इतना सीनियर एक्टर्स को मैं मैनेज करना कैसे है, पूरा कंप्लीट. आई वांट टू कम विथ कंप्लीट shot design and all. I already worked about that. So maybe भगवान मेरे साथ है, इतना तक लेके आया और आगे भी लेके जाएगा, जिस मेरा विश्वास है. ये सब होने के बाद देख लेंगे कौन रिलीज करेगा. Thank you. Thank you so much. Hi, I am Surya. I am from Hyderabad. आप देख रहे हैं मुंडे न्यूज़, बहुत पुराना चैनल इन मुंबई. थैंक यू सो मच. बहुत शुभकामनाएं बोल रहा हूँ मुंडे न्यूज़ के लिए. हमारा फिल्म वुमेन डायरीज रिलीज़ हो रहा है. ओके, हमारा फिल्म वुमेन डायरीज अगस्त पे रिलीज़ हो रहा है. प्लीज़ वॉच इट. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया.